A very good afternoon and welcome to our session on the topic Management of Fever in Kids. We are glad to have Dr. Ramani Ranjan among us today to help us understand the topic. The doctor will take us through in detail more in the session today. So if you have any questions, any queries, post that on the comment section so that the doctor can take it in the last of the session and will solve all your doubts by then. Stay tuned till the last. Now, doctor, you have the stage. Right, thank you. Thank you so much for kind introduction. Right, so I am Dr. Ramani Ranjan, Senior Consultant, Neonatologist and Pediatrician at Apollo Cradle and Children's Hospital in Greater Noida. I welcome you all for this today's session. आज हम लोग फीवर के बारे में बात करेंगे. बुखार, as you know, बहुत ही common symptom है बच्चों में, and sometimes it is very alarming, especially अगर high grade fever हो जाता है. It causes a lot of anxiety in parents and so इन सब बातों पे आज हम थोड़ा डिस्कशन करते हैं कि what is when we should be alarmed, when we should reach out to the medicos and doctors and healthcare professionals, what are the important things about fever. So इन सब बातों पे आज हम डिस्कशन करेंगे. So fever basically is a manifestation, is a symptom. It's not a disease, it's a manifestation, it's a symptom of a disease. It can be because of viral reasons, it can be because of bacterial reasons, it can be because of inflammation in the body, it can be because of other parasites like malaria and other parasites if they infect our body. So it can, there could be multitude of reasons for a fever to be there. And however, most commonly जो हम देखते हैं day to day life में, it's the viral infections which are the most common reasons, most common reason of fever in children. Now, अगर हम एज ग्रुप की बात करें, so if the child is small, say less than 3 months, then any fever we take it very cautiously, क्योंकि 3 महीने के अंदर बच्चों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, and it could lead to serious issues if it is not handled in time, or the antibiotics are not started in time. So any fever less than 3 months, we must consult our doctor. This is very, very important. And more than 3 months, usually we can start medicines on the advice of a doctor, and then we can watch for some time. But having said that, fever की intensity, fever की duration, the otherwise well-being of the child, ये सारी चीजें भी matter करती हैं हमारे लिए. So if we go by what is normal and what is not normal, so most of the times when we see if fever is high grade, especially more than 100, 100, 200, 3, अगर spiking ज़्यादा है, intensity ज़्यादा है, then it could mean some kind of serious infection. As I said, most of the times it is because of the viral infection, but sometimes it could be because of the bacteria as well. And the management is different. If it is a bacterial infection, we might have to think of antibiotics. Antibiotics का जहाँ तक सवाल है, in most cases we do not need antibiotics for fever because it, as I said, the most common etiology is viral. सो बहुत बारी हम ये देखते हैं कि ओपीडी में जब बच्चे आते हैं, ऑलरेडी एंटीबायोटिक्स डे 1 फीवर पे ही हमने स्टार्ट कर दिया होता है, इवन इफ the fever is very mild and the child is otherwise playful. So this is not the right thing to do. पुराने प्रिस्क्रिप्शंस के हिसाब से we start following that this time भी एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देना है, लास्ट टाइम हमने दिया था. So this is not right actually. Based on the clinical condition, based on the well-being of the child, based on other features, we have to take a call whether we want to start antibiotics or not, and let the medicals, let the doctors decide whether your child needs antibiotics or not. खुद से antibiotics start कर देना is not the best of ideas. Yes, if the fever if the child is having fever, it's good to start on paracetamol. जो doses हैं उसके हिसाब से आप दे सकते हो, and then you should meet doctor as soon as possible to evaluate the cause of fever. फीवर एज आई सेड मोस्टली वायरल होता है, बट दूसरे रीजन्स जो होते हैं वो हो सकते हैं, ईयर इन्फेक्शंस में फीवर हो सकता है, थ्रोट के इन्फेक्शन से फीवर हो सकता है, लंग में इन्फेक्शन निमोनिया हो उसकी वजह से फीवर हो सकता है, वेरी सीवियरली ब्रेन में इन्फेक्शन हो, मेनिंजाइटिस एनकेफेलाइटिस मेनिंगोएन्केफेलाइटिस, उसकी वजह से फीवर हो सकता है, नीचे जाए पेट में इन्फेक्शन हो उसकी वजह से फीवर हो सकता है, यूटीआई में फीवर हो सकता है, कहीं भी शरीर में इन्फेक्शन हो बोन्स मसल में उसकी वजह से फीवर हो सकता है. देयर आर मल्टीपल रीजन्स, एंड जब आप बच्चे को लेके हमारे पास आते हो, then we usually examine the kid, we see from top to bottom what could be the most common etiology of the fever, and then accordingly we take a call with what medicines are to be started and what not. So and I was talking about the red flags. So persistent high fever, अगर 102 103 रहता है, then it could mean some serious infection. It has to be taken seriously.
well-being of the child, like how is the child in between fever is also very important. Suppose करते हैं बच्चा अगर फीवर जब नहीं है उस दौरान बहुत प्लेफुल है, एक्टिव है, is completing his diet and stuff, तो इसका मतलब मोस्ट लाइकली ये वायरल इलनेस है. ऑन द कंट्रारी अगर हमें ऐसा लगता है कि नहीं बच्चा इज लेसलेस, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इज sleepy, drowsy, then it could mean some kind of serious infection, and that is not right. So this is another red flag. Hydration status is very very important. I keep telling to parents that बच्चे को हाइड्रेटेड रखना बहुत जरूरी है. इट्स वेरी कॉमन दैट द एपेटाइट विल गो डाउन जब इन्फेक्शन होती है, वायरल इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो. एडल्ट्स भी इनफैक्ट दे फील लो, द एपेटाइट गोज डाउन. सेम स्टैंड्स ट्रू फॉर चिल्ड्रन एज वेल. सो एपेटाइट कम होना बहुत लाजमी है, बहुत कॉमन है, बट we have to make sure you are giving adequate fluids to the child. So proper hydration is very very important. हर 2-3 घंटे पे कुछ कुछ फ्लूइड्स देते रहना है. नॉर्मल वाटर, हल्का कोकोनट वाटर नॉर्मल टेम्परेचर पे, नमक चीनी का घोल, ओआरएस, सूप, छाछ, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फ्लूइड्स विच कैन बी ऑफर्ड. बहुत ज़्यादा जूसेस, कोल्ड ड्रिंक्स, ग्लूकोज वाटर डू नॉट हेल्प इन मेंटेनिंग गुड हाइड्रेशन. सो ये सारी चीज़ें हमें अवॉइड करनी है. घर का फूड ऑफर करना चाहिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बाहर की चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि फीवर के साथ कभी कभी गैस्ट्राइटिस भी होती है. देर इज इंक्रीज्ड चांसेस ऑफ वॉमिटिंग एंड स्टफ whenever there is a fever. So खाने पर भी हमारा खासा खासा ध्यान होना चाहिए. सिर्फ और सिर्फ बुखार ही नहीं बल्कि ओवरऑल मैनेजमेंट पे भी हमें ध्यान देना है. हाइड्रेशन, फूड, रेस्ट इज समटाइम्स इक्वली इम्पोर्टेंट. अगर हम रेस्ट देते हैं बच्चे को तो रिकवरी जल्दी होती है बनस्पत उसके कि बच्चा हमेशा स्कूल जा रहा है या फिर बहुत एक्टिव है. रिकवरी माइट टेक अ लिटिल बिट मोर टाइम. सो रेस्ट, good nutrition, proper hydration along with medicine is actually the norm when we treat fever. अब रह गई बात इन्वेस्टिगेशंस की. सो एज आई सेड मोस्ट ऑफ द टाइम स्पायरल इन्फेक्शंस होते हैं तो हमें इन्वेस्टिगेट नहीं करना होता है, बट बेस्ड ऑन सर्टन पैरामीटर्स, इंटेंसिटी ऑफ फीवर, ड्यूरेशन ऑफ फीवर, बेस्ड ऑन क्लिनिकल फाइंडिंग्स कभी कभी हम इन्वेस्टिगेट करते हैं. जो कॉमन कॉजेज ऑफ फीवर होते हैं जैसे कि टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, लंग्स में इन्फेक्शन, ईयर में इन्फेक्शन, थ्रोट में इन्फेक्शन, ये सब के लिए एग्जामिनेशन और जो जांचें होती हैं वो डॉक्टर आपको ऑफर कर सकता है. Again, you should consult a doctor before you go for investigations because it's important to include those tests also, which the doctor thinks is important for your kid. So, I would suggest self-medication should be avoided. It's good to start child on paracetamol, but as I said, it's good to meet your doctor as soon as possible. Self-medication, self-antibiotics, ये सभी चीज़ें avoid करनी चाहिए. And sometimes it happens that the fever is not going on, not coming down. It's been some time, or if there are features of dehydration, then we might have to admit the child as well in hospital settings. तो फिर मैं admit करके उनको thoroughly investigate करना पड़ता है. कभी-कभी intravenous medicines का भी role है, fluids, antibiotics and stuff we might have to start. This is not very common, but sometimes yes, we do admit children to thoroughly investigation what could be the cause of fever. Having said that, most of the fever patients we are able to manage on OPD settings itself. ऐसा बहुत कम ही होता है कि हमें उसको admit करने की जरूरत पड़ती है. Right. So my take-home message would be that we have to take care of the child as a whole rather than just medicine. So, along with medicines which help with fever, we have to also make sure child is well hydrated, child takes proper nutrition, rest मिले बच्चे को, डॉक्टर के साथ सलाह करके जरूरी जो जांच है वो हम कर लें. एंटीबायोटिक्स स्ट्रेट अवे स्टार्ट नहीं करें, डॉक्टर की सलाह पर ही स्टार्ट करें, और भी साथ में जो मेडिसिन है वो डॉक्टर की सलाह पर ही स्टार्ट करें. मोस्ट कॉमनली पैरासीटामोल जो दवा है, जो सबसे कारगर और सबसे सेफ दवा है बच्चों में, वही स्टार्ट यूजुअली हम करते हैं. बाद में ज़रूरत के हिसाब से अगर कुछ और मेडिसिन ऐड करने की जरूरत पड़ेगी देन वी एड इट. सो दीज आर द थिंग्स दैट वी शुड बी अवेयर ऑफ. एंड एज आई सेड इन द वेरी बिगिनिंग, इफ योर किड स्मॉल, से लेस देन 3 months, less than 6 months, you have to be little more cautious because sometimes a fever can be a manifestation of serious underlying bacterial illness. और उस केस में आपको अगेन सेल्फ मेडिकेट नहीं करना है, बच्चे को डॉक्टर से मिलना है, डॉक्टर से सलाह लेनी है एंड देन टेक इट फॉरवर्ड. समटाइम्स वैक्सीनेशन आल्सो लीड्स टू फीवर, है ना. हम ये कहते भी हैं कि वैक्सीनेशन के बाद 24-36 मैक्सिमम 48 घंटे तक थोड़ा बहुत माइल्ड फीवर आ सकता है. यूजुअली यू वुड बी गिवन सम काइंड ऑफ पेन रिलीफ और फीवर मेडिसिन अलॉन्ग विद वैक्सीनेशन. जरूरत के हिसाब से हम उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं. एंड बहुत रेयरली, जब मैंने बताया जैसे हम वी एडमिट द चाइल्ड फॉर सीरियस इन्फेक्शंस एंड समटाइम्स रेयर कॉजेज ऑफ फीवर कुड बी देयर, and then it needs thorough investigation. Sometimes we also involve multidisciplinary team, जरूरत के हिसाब से ENT डॉक्टर्स हो गए, सर्जन्स हो गए, उनका भी इन्वॉल्वमेंट अगर जरूरत होगा तो हम करते हैं, अगर हमें ऐसा लगता है कि कुछ एक पर्टिकुलर एरिया जो कुछ एक बॉडी पार्ट के साथ कंसर्न है. So I think this is it from my side. The ultimate message is that
not panic. Start medicines, paracetamol as per the last doses. Sponging is something which we can do as well. It is as effective as paracetamol. Hydrotherapy कहते हैं. So हल्का गुनगुना पानी या टेपिड स्पंजिंग कहते हैं. सर से पांव तक अगर आप बच्चे को पोंछोगे तो फीवर कंट्रोल और अच्छा रहेगा. Along with medicines, it is recommended to do hydrotherapy as well. एंड इसके साथ खान पान का ध्यान रखना, हाइड्रेशन का ध्यान रखना, यूरिन आउटपुट मॉनिटर करना. दिन भर में कम से कम 5 to 6 times यूरिनेशन इज अगेन अ गुड साइन. दैट मीन्स बेबी इज वेल हाइड्रेटेड. सो इन सब बातों का ध्यान रखना एंड यू शुड गेट इन टच विथ योर डॉक्टर एज सुन एज पॉसिबल फॉर प्रॉपर इवेल्युएशन एंड इफ नीडेड इन्वेस्टिगेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द चाइल्ड. So I think that is it from my side. If there are any questions, we can go ahead with this. Please go ahead. If there are any questions, please shoot. More than happy to take those questions. All right, I think there are no questions for the time being. If you come across anything in your mind, if you think there's any doubt, you can always come down to meet us or leave a message for us to get back to you. Thank you very much for your kind and patient hearing. Have a nice day. Thank you.